Why someone mentioned the name build trust in conversation. Welcome to 1 million challenge in 1 year. This is day 39 of 365 days. इस जर्नी में हम शेयर करेंगे few points which you can look at that is I'm documenting myself every single day that I'm sharing something which is most important thing. That's my point of view, and research also says that one point I would say about how was my day. जैसे ये डॉक्यूमेंट है, it's about myself. तो मेरा दिन कैसा रहा, I will share about that. And second thing, I will share inside of the book which I'm reading currently right now. Third thing is what I learned from the podcast which I have seen today. And the fourth and the fifth point is geopolitics and AI update. These are a few points we will talk about it. ये जस्ट नॉर्मली विदाउट स्क्रिप्टेड वीडियो है. यहाँ पर ऐसा कुछ एडिटिंग नहीं है, बट यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन इफ यू अप्लाई दोज थिंग्स विच आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो समवेयर दैट विल इम्प्रूव योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल आज हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन के ऊपर. इन द कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट है वाई अगर किसी का कन्वर्सेशन के अंदर नेम मेंशन करते हो वाई इम्पैक्ट लॉट एंड हाउ इट्स बिल्ड ट्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बुक के बारे में. तो अभी मैं बुक पढ़ रहा था हाउ टू इन्फ्लुएंस द फ्रेंड्स. तो उसके अंदर एक पॉइंट मैंने पहली पढ़ी, आज फिर से स्टार्ट किया पढ़ने के लिए. तो उसके अंदर एक पॉइंट था, जब तुम किसी से अगर बात कर रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा स्माइल होना चाहिए फेस पे. जस्ट विश एंड आस्क वो, एंड उसका नाम मेंशन करो कन्वर्सेशन में, ही फील समथिंग डिफरेंट. ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी से बात करते हैं, देन वी जब किसी को हम दोनों ज़्यादातर उनको जानते नहीं हैं. व्हेन वी आर स्पीकिंग टुगेदर, तब हम उनके बारे में बोलते हैं. देन वी मेंशन द नेम दैट समथिंग फील गुड इनसाइड. सो उन्होंने बताया उस बुक के अंदर दैट इफ यू आर मेंशनिंग ओनली कन्वर्सेशन, दस ओनली मेंशन द नेम, दैट समवेयर विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. हम दूसरी बात करते हैं पॉडकास्ट. पॉडकास्ट में मैं देखा जो पॉडकास्टर था, एंड ही highly recommended that every single person should mention the name in the conversation. Why it's important? It's somewhere affect your emotional. This your subconsciously mind release very good signals and the feeling emotionally that you somewhere connecting that conversation. So every single person always should mention the name if you are talking to someone. Sometimes we think we should not take the name, but it's somewhere is killing your confidence, is killing to your conversation. जब हम किसी का नाम लेते हैं ना, that's somewhere it's connecting our emotional, it's connecting with the feelings. ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट माय जर्नी अबाउट हॉस्पिटैलिटी एंड वर्किंग. वी कवर 2 पॉइंट्स इन दिस 2-3 मिनट्स. सो हॉस्पिटैलिटी में एक सबसे पहले पॉइंट हमको सिखाया जाता है, वी शुड नॉट से टू गेस्ट नो. ये मैंडेटरी है. तुम किसी गेस्ट को भी नो नहीं बोल सकते, नो मैटर व्हाट दे आस्क. बट तुमको पता होना चाहिए कैसे तुमको रिप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने आउट ऑफ मेन्यू कुछ पूछ लिया, तो तुम बोल सकते हो सर गिव मी सम टाइम, लेट मी चेक विद द शेफ इट्स पॉसिबल टू गेट फॉर यू और नॉट. एंड ही वुड से, द गेस्ट बोलेगा हाँ ठीक है जा सकते हो नो प्रॉब्लम, और तुम बोल दो नहीं है सर हमारे पास. यू कांट से दैट, समवेयर यू ऑफेंडेड द गेस्ट. उसको ना करना ही नहीं है. इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड सेकंड प्रायोरिटी क्या रहता है, जब भी गेस्ट आ रहा है कोशिश करो कि ट्राई टू गेट टू नो वो व्हाट इज नेम. जब तुम गेस्ट से मिस्टर दीपक, मिस्टर राहुल, एंड व्हेन यू मेंशन दैट यू फील समथिंग गुड. उससे अभी जो मैं अभी बता रहा हूँ ये, इसके बारे में पहले मुझे नहीं पता. व्हेन आई रीड दिस बुक कुछ दिन पहले पढ़ाई है मैंने ये बुक को, देन आई गॉट टू नो स्माइलिंग एंड read the mention name, how to ask the question. There's lots of things there. We will cover lots of things. We are covering next 90 days about communication. This is journey 365 days. इसके अंदर 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ. कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग एंड सेल्स मार्केटिंग और फाइनेंस. इस तरह के पॉइंट हमारे रहेंगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए. तो ये डे हमारा 39 है ऑफ 365 डेज है. तो कम्युनि और गेस्ट से जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आया, फॉर एग्जांपल आज क्या हुआ कि जब गेस्ट आया, एंट्री किया, एंड आई हैड द लिस्ट ऑफ द गेस्ट नेम. आई जस्ट आस्क्ड द रूम नंबर, ही सेड दैट रूम, एंड आई जस्ट प्रोनाउंस हिज नेम. ही फील वेरी नाइस एंड गुड.
एंड उसको मैंने अप्रोच किया, दैट्स आई वेंट टू द टेबल एंड व्हाट ही लाइक टू हैव, लॉट्स ऑफ वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हिम, बिकॉज़ जब किसी से नाम लिया ना, उस केस करता है ना, ही कनेक्टेड विद अस, बिकॉज़ उसको फील होता है यार, समबडी इज़ लाइक नोइंग मी, समबडी इज़ केयरिंग मी, सो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी शुड फोकस। और हम पॉइंट्स पे आते हैं अबाउट एआई। तो एआई का भी रिसेंटली अपडेट आया है अबाउट जेमिनी का। उसमें क्या है कि गूगल ने अपना एआई को और इन्हेंस किया है। फॉर एग्जांपल गूगल के कुछ प्रोडक्ट एंड हैं, जैसे गूगल डॉक है एंड स्लाइडर है, एक्सेल है एंड लॉट्स ऑफ, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उन्होंने उस एआई जेमिनी को उसके अंदर कनेक्ट किया है, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी और इन्हेंस हो सके। फॉर एग्जांपल हमें कुछ लिखना है, दैट यू कैन राइट समथिंग विद द हेल्प विद द जेमिनी। पहले हमें गूगल पे ही मिलती है जेमिनी, अभी हमारे यूट्यूब पे मिल रही है। जीमेल में जाओ, उसमें भी जेमिनी है, जेमिनी, तो उसमें सारी चीजें हमारी हेल्प कर रही हैं। देन इसमें दो चीज हैं, दो तरीके समझ सकते हैं, एक हेल्प भी कर रही है and एक हमको किल भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हमको हेल्प कर रहा है तो हम उसको एडिक्टिव नहीं होना है, वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। इफ दे आर राइटिंग समथिंग, यू नीड टू रीड प्रॉपरली एंड यू नीड टू कीप इन माइंड दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल मेल समथिंग, मेलिंग समवन, that you have to understand how you read last time, what was the mistake you did, so you can मतलब उसको तुमसे एक आइडिया मिलेगा, then you can write the mail, you can send someone, इससे फायदा रहेगा। एंड द लास्ट पॉइंट वी विल टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ चल रहा है अभी। आई टॉक अबाउट इन इंडिया, दैट्स लॉट्स ऑफ स्प्रेडिंग वेरी बैड न्यूज, मतलब चलती रहता है। चल रहा है इन द सेंस कि आजकल अगर तुम न्यूज खोलोगे तो दैट यू विल गेट 90% of that in India, all over the India, someone killing the Muslim, someone beated the Muslim, someone snitching the Muslim, someone uh, brutally the Muslim, killing the Muslim, beating the Muslim, and they forced to say the Jai Sri Ram. That they are belong somewhere one organization. There are some organization working like that, but they are saying I am not saying like lots of things there. But I don't know where we are taking our country, so we should understand this. We should go for learn something. We should enhance our knowledge. We need to improve our communication. We need to improve our personality. So these kind of things we should focus. And so these were points we these are the point we have discussed. For example, one, communication, why the name is most important in the conversation, and how was my day, that I mentioned also, that's also impact connected with the the communication mentioned the name. तो जब तुम किसी का नाम लेते हो, दैट समवेयर इज कनेक्टिंग फॉर यू। सो दीज आर फुल पॉइंट वी हैव कवर्ड, सो वी विल कम बैक टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, एंड जिससे हम कुछ और सीख सकें एंड दैट कैन कनेक्ट विद आवर लाइफ। सो ये हमारा डे था 39 ऑफ 365 डे, 1 मिलियन अर्निंग चैलेंज इन 1 ईयर। तो अभी तक तो 90 डेज हो गया, 39 हो गया, बट आई डेंट earn anything yet, but I believing it's somewhere it will be help me a lot which is coming days। मुझे लगता है जो 39 डेज मेरा हो गया है, नेक्स्ट 39 डेज होगा तो और बेटर होगा, दैट वी विल गेट समथिंग। सो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू टुमारो, थैंक यू।